गुड मॉर्निंग इंडिया वाले दोस्तों, आपके वहाँ आज हुई होगी जनवरी 31 ऑफ 24, लास्ट दिन ऑफ जनवरी। ये मंथ बहुत ही बढ़िया रहा इंडियन स्टॉक्स के लिए एंड मोस्टली द ग्लोबल स्टॉक्स एज वेल। आज वी विल बी एनालाइजिंग द स्टॉक रिलायंस, जो सबका फेवरेट था इन 90s। इट केम बैक इन 2010 और इट्स स्टिल many people's favorite stock. अदानी अभी आया लास्ट 8 साल 10 साल पहले। TCS, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स आए, काफ़ी टाइम से थे, आए 15 साल पहले, 20 साल पहले। बट रिलायंस इफ यू सी, इट्स कमिंग फ्रॉम 1980s से सुना था, 1990s से। इट इज़ अ लॉन्ग वे फॉर सच अ कंपनी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो लेट्स कीप इट फास्ट, लेट्स कीप इट मूविंग फास्ट। एंड व्हाट आर वी, हम लोग क्या देखने वाले हैं? सो बेसिकली इलियट वेव थियोरी, व्हाट वेव्स, कौन से वेव में है ये स्टॉक, एंड किस तरीके से हमारी पोजीशन एडजस्ट करनी चाहिए इफ़ वी आर इन द करंट सिनारियो। अगर आपकी होल्डिंग है या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो कौन से की पॉइंट्स हो सकते हैं, और पास्ट में क्या हुआ एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर वो हो रहा है, दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन, यू हैव टू कीप वॉचिंग इट व्हाट्स हैपनिंग। इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग इन जो हमने प्रेडिक्ट किया था, what else is giving us a clue? So दो स्ट्रेटजी ऑलवेज होनी चाहिए। एक जो आपने सोचा उस डायरेक्शन में जाए, जो दूसरी आपने जो सोचा नहीं था और जो लग नहीं रहा था होगा वो हो रहा है। सो बेसिकली यू आर गेटिंग इट वंस द ट्रेड दैट गोज इन योर prediction and the trade that goes in opposite direction of your thoughts. आपको दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए। सो फिबोनाची ट्रेसमेंट्स लाइन ड्रॉ कर दी गई है। सो इट्स वेरी सिंपल, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। सो राइट नाउ मैंने यहाँ से लो पॉइंट से ड्रॉ किया है हाई पॉइंट तक। सो हम लोग एक चीज़ नोट करना चाहेंगे। सो दिस इज़, ये रन हो रहा था यहाँ से यहाँ सबसे पहले वाला, तो देखे तो स्टॉक्स ने गिव अप कर दिया था उस टाइम, ऑलमोस्ट 78% गेन जो भी बनाया था। सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरी फर्स्ट वेव ऑफ इलियट वेव। मोस्टली जब कंपनी डेवलप हो रही होती है फंडामेंटल से, सो it will do well, it will not do well, there will be restructuring happening. Could be bad quarters, could be bad years for the company till it figures it out. Lots of company fails in this, lots of company नहीं कर पाती restructuring, lots of company fail हो जाती है, so they will not have a chance to bounce back. Good companies, and if you see बहुत सारी company that will fall in this structure, I mean each and every one of them will fall in this structure, but कई सारी कंपनियां बस यहाँ से लुढ़क के नीचे ही रहती है, ऊपर आ नहीं सकती। और जो अच्छी होती है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, the company has a good products that keeps growing. So then लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। ये 1Q मूव हो रहा है यार, चलो इसको ऊपर ही छोड़ दो। सो ये वाला रन हुआ था, तो आपने देखा तो ऑलमोस्ट 50% गेन लॉस कर दिया था जब करेक्शन हुआ। दैट्स फाइन। व्हाट्स नेक्स्ट? ये वाला रन हुआ, तो द लॉस दैट वाज, द अमाउंट दैट वाज गिवन, जो नीचे गिरा था, वो सिर्फ 23% ऑफ द टोटल गेन फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू था। एंड राइट नाउ वी आर हियर, हम लोग आज तकरीबन यहाँ पर है, राइट। सो अगर लेट्स से ये वेव एक करेक्शन हो गया है, कुछ भी होने वाला है, सो व्हाट इज़ द मिनिमम दैट इट कैन करेक्ट टू? 2300 तक वो होने वाला है, मुझे नहीं मालूम, बट हो सकता है, या एनी गिवन टाइम दिस कुड कम ईजीली। बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ होनी ज़रूरी है। दिस इज़ ऑन अ वीकली बेसिस, सो दैट्स our Fibonacci that I just wanted to let you know. So I will just note my 23, which is 2300, और दूसरा keep an eye on 1856. We just don't need those numbers, but keep an eye on those numbers. ये I will keep it throughout the chart. I am not gonna erase it. Erase नहीं करूँगा, उसको चाहिए।
Mostly I keep my charts as it is. I do not keep plotting it. So वी आर लुकिंग ऑन अ वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, ये बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम है. सो दिस इज द वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 हियर, और वेव 5 नहीं फिनिश हुआ. और आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज, ये वेव 3 क्यों नहीं है, ये वेव 4 क्यों नहीं है, ये वेव 5 क्यों नहीं है. यस, आप बोल सकते हो ये 3 है, ये 4 है, दिस इज़ 5, कंप्लीशन यहाँ पर हो गया, ये नया वेव स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे. सो दिस इज़ माई 0, ये 1 है, 2 है, ये हम तीसरे वेव में है. दैट इज़ ट्रू एज वेल. इट डिपेंड्स आप कौन सा टाइम सिनारियो देख रहे हो. आई लाइक टू कीप द पिक्चर बिगर फ्रॉम द बिगिनिंग इफ़ आई कैन हैव द प्योर वेव काउंट एंड आई कैन जस्टिफाई. अगर जस्टिफिकेशन कर सकते हो आपको अपने आप को, that is fine. You don't have to go outside and prove it to anyone that this is your point of view. As long as you are good and you are profitable at the end of your trade. So that's what we want. क्यों ये मेरा 3 पॉइंट नहीं है. सो जब भी वेव 3 हैपन्स और वेव 5, वो एकदम रैपिड एक्सपेंशन होता है. आई मीन, सो इट्स अ फास्ट मूवमेंट, shooting up candles actually. So this one has the characteristic of it. आप देखो, the angle of the bounce is very sharp. It's not अगर यहाँ पर देख रहे थे ये एक ऐसी डायरेक्शन में था और यहाँ पर से एकदम से शूट होना चालू हुआ. इफ़ यू, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है और ये स्लोप ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पर. सो ये बोल सकते हो कि ये एक पैटर्न थी, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है ओवर हियर, क्योंकि अब ये जो है इट्स यहाँ वाला एंगल, इट्स नॉट अ सेम एंगल ऑफ दिस वन, इट्स लिटिल बिट चेंजिंग. इट्स बिटवीन दिस, ये वाला, एंड दिस वन इज मैचिंग द slope has nothing to do it, but that's a visual. That's what you see in the waves. That is the characteristic of the waves. Characteristic होती है हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की, हर एक फ्रूट्स की, हर एक वेजिटेबल्स की. सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव 3. हमें नहीं मालूम है व्हाट वेव इज़ एंडेड. आई एम जस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से मेरे वेव्स होंगे. सो ये हम ब्लू वाला जो है रोमन अल्फ़ाबेट्स, दैट्स द बिगर, आई मीन बिगेस्ट टाइम फ्रेम वी आर लुकिंग. So this is my wave 1, wave 2 over here. Wave 3 हमें नहीं मालूम है कहाँ पर ख़त्म हुआ या हो गया कि नहीं हुआ. सो वहाँ पर मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ. सो हर एक वेव 5 वेव का बना होता है. सो देखते हैं वेव 3 भी 5 वेव का बना होना चाहिए. सो यहाँ पर मेरा 2 ख़त्म हो गया करेक्शन, दैट इज़ वेव 2. सो वही पॉइंट मेरा बिगिनिंग ऑफ वेव 1 और 3 इन द बिगर साइकिल. अगर ये मेरा वेव 1 है तो आप देखोगे यहाँ पर भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा था, बट इस टाइम इसने ये जो लॉस, ये जो गिव अप किया, दैट इज़ बिटवीन 50% to 60% over here. Still that satisfies the characteristic of wave 1 of the longer run. So ये wave 1, तो ठीक है, ये डेफिनेशन सही बैठती है. दिस इज़ वन गुड पॉइंट ऑफ व्यू. देन वेव 3 स्टार्ट्स हियर ऑफ बिगर वेव 3 एक्चुअली. ओके, ये नीला वाला, आई मीन ब्लू वन. सो लेट्स सी, वन आई वांट टू कॉल दिस इज़ द एंड ऑफ वेव 3. हुआ है नहीं हुआ है आई डोंट नो, बट बिकॉज ये जो एंगल्स है इट्स चेंजिंग इट, सो आई वांट टू कॉल इट माई 3. इट कुड बी डन, इट कुड नॉट बी डन. नाउ हम लोग जाके चेक कर रहे हैं. सो नॉर्मली क्या होता है, सो whenever the wave runs, wave 3 happens, it's a rapid expansion. One of the wave, जो 3 waves इन अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, वन ऑफ लेट्स से ये 0 to 1 है, तो नंबर 3 वेव इज़ गोना बी इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.618 ऑफ वेव 1. अगर वो नहीं है, इफ़ इट कम्स शॉर्ट, then the wave 5 is going to be having the characteristic of that. So that is one of the basic observation happening in Elliott wave.
सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपका एक वेव है दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेव 1 बाय 1.61. 1.618 इज़ द गोल्डन रेशियो. सो आप बोल सकते हो मेरा वेव यहाँ पर 3 ख़त्म हो गया, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो दिस इज़ वेर माई वेव 1 इज़ वेव 3 इज़ गोइंग टू बी एंडिंग. अब जो बड़ा वेव 3 है जो हमारा 1990 से चल रहा है अभी, बट मैंने जैसे बोला आई मीन आपके पास कुछ होना चाहिए. यू हैव टू हैव वैलिड पॉइंट कि टेल यू ओके दिस इज़ माई वेव 3. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2600 है, यहाँ पर 2000 है. करेक्शन 600 रुपये का हुआ है. करेक्शन इज़ नॉट स्मॉल करेक्शन आफ्टर दिस वन, राइट. सब उससे ज़्यादा मेजर वाला यहाँ पर 1435 से 780 800. सो बेसिकली 600 रुपये यहाँ पर भी गवा दिए गए थे, बट तब उसका वैल्यूएशन 1400 था. नाउ इट लॉस 600. सो इट स्टिल समवेयर अराउंड 61% अप रहा था, राइट. ये वाले ट्रेड में उसने गेन किया यहाँ से. द गेन वॉज फ्रॉम समवेयर अराउंड 800. इट वेंट ऑल द वे अप टू 2600 एंड देन वो जाके $600 600 रुपये लूज़ कर रहा है. सो यहाँ पर टोटल what we see the valuation, the gain जो हुआ था वो 2600 माइनस 800 तो 1800 हो गया. 1800 में से 600 तो 33% 33% was given. So this is fine. Wave 3 is the strongest wave. अगर strongest wave होता है तो ये जो pull back आएगा that normally stops between 23% to 38%. If the market is not decisive, agar company don't know the future about the company, it can drag up to 78% of the correction. When there is a boom in the company, then it stops at 23%, 30%, 38%. It doesn't go more than that. So this is the case. Let's call this a wave 3 that ended just short of 1.618 here. So what हम क्या देख रहे हैं, wave 5 how it's gonna pan out. Wave 5 अगर होगा that I'm looking the equality base at least 3167 अगर equality base हुआ तो so that is एक scenario है 3167, but there should be one wave. एक wave is gonna be multiplication of wave 1 over here. Let's keep it here. So 1.618 value आती है 3910. That's a huge target right now. अभी वो 2800 पर है. I mean we are looking, बोल रहे हैं कि $1100 और रुपये और बढ़ सकता है. We are not here to see it, but we are here to see what's happening in last 2-3 weeks and how to adjust our position. But yes, everyone knows bullish है 3172 3900. So that's where I am concluding. ये मेरा फोर्थ वेव यहाँ पर ख़त्म हो गया. So this is the major one 1 2. I am not calling मेरा वेव 3 ख़त्म हुआ है and 4 यहाँ पर है. 3 is still going on. It can end here 31 or it can end here. We don't know. It's not the end of the wave 3. ये वाला wave जो inner wave of bigger wave 3 is there. We are just trying to focus on it. So that is telling me that based on that theory you should be traveling minimum 3172. So let's keep our finger crossed. I mean 3172 is 300 रुपये यहाँ से और भी ऊपर है. That is 10% from the valuation right now. So this is our fourth wave and this is the fifth wave. अभी तक ये weekly chart है. Let's focus. Let's make it on a daily chart. And I'm gonna delete this one जो पुरानी study है. So हो गया, चला गया वो. ये हमने यहाँ पर 3 रखा था, ये यहाँ पे 4 रखा था. 2800 से
है 2600 से 2000 चला गया था, 600 रुपये का जो डीप आया था वो। ये भी एक वेव हो सकता है ऑफ द fifth wave. This could be our wave 1 in reality if we are looking in the bigger, but that's wide timeline, and हमारा एक wave count है that is carrying from 1980s. So मुझे ये wave count नहीं carry करना है, that involves almost 1 year, 8 months or so, 6 months or so. This is past. This is what happened. My wave 3 was here, my wave 4 is here. You want to call it wave 1 of the bigger wave? Yes, then this is your wave 3. What आप क्या देखोगे? The characteristic of this is going to be zooming upwards, shooting upwards like this. But I do not have that view, so I'm not looking for that characteristic here. I'm even still fast forward to here. ये जो भी हुआ वो, I'm looking one thing here. जो wave counts draw करते हो, that depends on your time frame, but as we are prospecting this for a longer run, this is not a shorter term that we are looking. So let me, आप देख रहे हो, still it's not clear how you can say, आप कैसे बोल सकते हो ये मेरा wave 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये wave 5 है. 4 hours कर दो उसको. आपको कुछ और बेहतर दिख रहा है? Can you see the angles and the slopes? नहीं दिख रहा है. Let's move it to 1 hour. Okay, can you visualize it better now? I do. यहाँ से नीचे आए, यू कैन कॉल, आप यहाँ पर भी 1 बोल सकते हो, यहाँ पर भी 2 बोल सकते हो, बट थिंक अबाउट इट. द करेक्शन हैपन्स व्हेनेवर द करेक्शन इज हैपनिंग, it spends more time in the correction. The shooting part, the going upward, is faster than the correction. Corrections, there is a undecisiveness, so we spend too much time on it. So this is my 1 correction, this is my 2nd correction over here, yes, this is my 2nd correction here, or this is my 3rd correction here. This could be part of something and this could be a part of something, we don't know. We are here to plot it now. So ये मेरा wave 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, 2 यहाँ पर हुआ. सो मुझे, आई एम स्टिल कन्फ्यूज वेयर आई एम गोना पुट माई वेव 3 हियर. लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव 3. वेव 3 इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन. यू कैन कॉल इट दिस वन माई वेव 1 ऑफ द वेव 3, और फिर इसको भी बोल सकते हो. इट्स, you can count it, but you have to justify. There are 3 basic rules of the Elliott wave that should be followed. If it's not followed, then your wave count is wrong. So the angles, look at the angles over here, where the angle changes. It changed here, ये वाला एक, it changed here a little bit, also it changed here. So आप इसको भी 3 बोल सकते हो, इसको भी 4 बोल सकते हो. Then you might be, this is your wave 1 of the bigger wave 5, this is wave 3 of that. So you have to justify yourself and you have to make sure rules being followed here. The way I will be plotting, I look at it at plotting is, this is my wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. I'm not concluding wave 5 right now. Yes, if I put my 3 here, 4 here, and this could be my 5th, or who knows, this could be my 5th, but still it's expanding. Still it doesn't justify the wave count. If I put 3, 4, then this should be my 5. We see in the bigger correction that happened here. Always the correction is going to be bigger in the valuation at the end of the 5th wave. Yes, ye 5th ho sakta hai. Then what are we looking here? We don't know, right? So this is the only way to justify the wave count, and we have to change our wave count the moment we see that it's wrong. Yeah, I mean, यहाँ पर ये wave 1, 2, this is my wave 3, 4, and 5th wave यहाँ पर ख़त्म हो गया. There is one wave is ending here, so this is 1 correction. But what happened? This is the expansion happening in wave 3.
Sometimes it happens, it carries for years and years. If you look at the Amazon stock, काफ़ी साल तक उसने expansion किया. I mean, Reliance, it is a case of expansion. Wave 3 we are in, and still it's being expanded. So based on the angle, I'll be calling this my 3, and this will be my 4. अगर आप फिबोनाची ट्रेसमेंट्स ड्रॉ करोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा. इट्स इन अ बूम फेज. यहाँ पर आया 23% गिव अप किया, या यहाँ पे आया 23% भी नहीं गिव अप किया. Now there is something happening here on the big scale. Whoa, it's still at 23%. It did not go more than 23%. So Reliance is having a characteristic. It's never giving up 23% in wave 3 most of the time, except the very first wave over here. Let's pull out on a daily basis. So Reliance के स्टॉक ने सबसे पहली बार गिव अप किया था. लेट मी चेंज इट वीकली. दिस वैल्यूएशन वाज द ड्रॉप ऑफ 78% ऑफ द गेन, जो भी गेन किया था. उसके बाद ये जो ड्रॉप किया था वो 61% किया था. उसके बाद रिलायंस ने कभी भी 38% से ज़्यादा गिव अप नहीं किया. एक्चुअली इन फैक्ट इट्स 23%. So that is the characteristic of Reliance. This is the clear indication of bigger wave 3 that we are looking, that involves multi-years. So still there is a room to run, and I see Reliance to be on ridiculous level that we earlier spoke. But hey, let's figure out what's the nearby future is telling us. एंड अगर वो सही रहा तो आप उसके बाद जाओगे 4800. अगर 3100 ही नहीं आएगा तो 3800 या 4800 कैसे आ सकता है? आई डोंट नो. आएगा नहीं आएगा, समथिंग कुड हैपन, गवर्नमेंट चेंजेस, यू नो, इट कैन कम डाउन. बट as of right now, what we are looking is उससे पहले लेट मी डू वन थिंग. वेव 1 यहाँ पर था. बेस्ड ऑन द इक्वालिटी बोल रहा है यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था. आई मीन वो तो हो गया. आई मीन दिस इज़ द क्लियर केस ऑफ एक्सपेंशन हैपनिंग. वेव 3. सो when the stock is stronger, you look for at least 0.6, 0.8 or 0.5 here of the valuation of the run of the year, or it could be inequality. The way I look at the chart, that the wave 5th of wave 3 should be ending around 3200, 3235, and then there should be a correction happening यहाँ पर, जो हमारा wave 4 कहलाएगा of the correction. ये हरा वाला, I mean the blue one. So wave 4, that if we see the correction कितना amount का हो सकता है, that the correction that happens after the completion of 5th wave, it's going to be the bigger of the correction that happened in the wave 2 and wave 4. ये वाला correction था. यहाँ पर हमको मिला था 1400 to 800, $600, $600, और यहाँ पर भी 600 था, 1200. सो अगर 3200 पर आया, देन इफ द करेक्शन, अगर वेव 5 ख़त्म हो गया है तो दैट कैन कम टू 2000. होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, बट वी आर इन द एक्सपेंशन स्टेट. 3200 is not going to be the stop, but we have to see where we stand right now. So let's fast forward back to current day. Now if you look at it closely, there is one channel being followed here. It's not easy to see it, but yes, we can make it clear for you.
You see this, you see this, you see this, you see this. Let's do the magic. Right, if you see, it stayed here to the center of the middle line. When it started to bounce back, it was sticking here, but it fell here again. But यहाँ पर एकदम से ऊपर आया, but it's coming back. It's trying to sustain higher, but there was a कल के दिन, yesterday there was a correction, $90 का I think, and we came down pretty much. Yeah, this is the one. 2917 से 2800 रुपये का एक ही दिन में, which is what, 3%. So it can, वो आ सकता है यहाँ पर कभी भी कोई भी टाइम पर, but what are the chances कि वो break करेगा 2700? I mean, yes, minor dip can happen, but that should be used as a buying opportunity. What is the condition for that to happen? You should not be breaking 2650 right away in short term. If you see, this is going to be good support. It was a resistance at one point while going up, and if we see in the past as well, there should be something happening, some activity happening. Over here, but this is the highest high. I mean, that's the stock is going through, so we don't have a history on it. I want to show you something over here. So what I am saying is, this is my number 4, this is my reflex point. So 2650, I have a stop loss. If you are looking, I do not advise anyone to do day trading, short-term trading. Investment is the best way to gain the financial freedom. Yes, many people are there who makes money in the intraday, but I do not recommend that. So let's see, ये correction हो रहा है. I mean, we don't know कितना लंबा चलेगा. I mean, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन. But based on what we seen yesterday, what correction is telling me the valuation wise, 1.618 पकड़ लो यहाँ पर 2759. That's my first stop. Next up, 2687. It could stop here though per be 2732. Most likely this center line is going to give hard time. I mean, it's going to give you good support actually, but it could happen anytime. Anything could happen in the stock market, but and you need to adjust your point of view each and every time if you see it's developing some new strategies. Sorry, I should not have erased that one. Let's put it back. I want to show you something. So ये जो correction होता है, that happens in 3 waves. अगर आप, you can spot 5 waves happening in the last phase, in the phase of the correction. That will be your last phase of the correction. I mean, do I see the 5 waves right now? You can, आप बोल सकते हो कि ये वेव 1 था, यहाँ पर वेव 2, ये वेव 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. नहीं, वेव 4 कैन नॉट गो इन द बॉडी ऑफ वेव 1. फिर ऐसा भी बोल सकते हो, ओ या दिस, ये वेव 1 है. आई मीन, हो सकता है, इफ दिस इज द वेव 1 दैट यू आर लुकिंग, then based on that the ridiculous target comes to 2759 is the first stop of the wave 3. So ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर फिर bounce back होगा, that will be 4, and then we will be going down. Yes, हो सकता है यहाँ पर at the end, but do we see it? No. I see one more scenario happening. So this is my A, B and C phase जो हो रहा है, that is going to be folding out in 5 clear waves. If you see, अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से एकदम से गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा. There was not, the transition एकदम smooth नहीं हुआ था. There was a panic, there was a trigger happening around that time. Could be algo trading, could be
orders being executed based on the price action. Could be, I mean, it looks like fast movements. If you see, this is the opening over here. You know how opening works in the first few hours, actually 30 minutes for 15 minutes for sure, and last, I mean, couple of minutes as well, last 15 or 10 minutes action भी रहती है काफ़ी. So the base, we go back to our, so this is my final phase of correction if I'm assuming it right. So this is my wave 1, this is my wave 2. Based on that, 1.618 gives me here, yes, let's call it, this is my wave 3 4. If I do it based on the equality, it's a strong run, it's not gonna go more than 50%, it can come here. So एक थियरी बोल रही है दैट इज दैट इट कुड एंड 2800 अगर करेक्शन यहाँ तक ऊपर हुआ. अगर नहीं हुआ और यहाँ से ही नीचे जाना चालू करता है, वी आर लुकिंग 2790 एज ऑफ राइट नाउ. In the worst case of equality of this wave happening, it's telling me 2770, and 2.618 gives me 2741. So we are not here for a day trading or weekly trades or anything. We are analyzing this stock for the longer perspective. It could change actually, but this is 2650. It should hold it, and if you are brave enough और आपको नई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो 2745. Now I'm going to show you something else. You see the dark green, ये basically EMA line है, exponential moving average, 13 days, 21 days, 55, and it has to do something with the Fibonacci as well, this one. So 4 indicators in one that I'm using it to get me when the movements are happening. You have to focus on the volumes as well. I'm moving fast forward. As we know, what else to look, you have to see this gap between 2 bands over here and one gap that is from the main line to here, how far it's stretching. You have to literally analyze it in the valuation time. If you start doing it, you get the better entries. So I will not be worried. चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Let's analyze the case that it was going down. ये वाला पकड़ लो, यहाँ तक ग्रीन था, right? It started going red over here. The correction, ये वाला correction होता है zigzag में होता है, unless you can literally spot clearly 5 waves folding, right? So that is one way to look at it. If you bring it here, ये वाला, this one was very typical complex correction. So this is X, Y, Z form of A, and same thing happening in wave B over here. And the correct 5 waves that I see, this is my 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4, and 5 happening here. So हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे. I want to show you the characteristic of this band. This is pretty awesome here. The difference that happens bigger, then there is a tendency it will try to catch up at one point. It has to do with the shorts and stuff. It applies when it's too high as well. अगर आप देखोगे यहाँ से इसका बहुत high हो गया, then it has to fall below this band actually at one point. Yes, you can use it as an entry point, or you could be warned if you are holding the position here and your time view point of view is short term. So whenever the gap happens bigger, it's gonna catch up at one point.
The gap is ridiculous over here. I mean, this is the gap that we see. And if अगर वैल्यूएशन वाइज देखो यहाँ पर तो 24.19 ₹90 और कैंडल स्टिक थी 90 रुपीज़ यहाँ से और कैंडल स्टिक का 40 है। अभी हम लोग जहाँ पर भी है सो 2582 2696 विच इज़ 110 रुपये और यहाँ से 2735 से ये है 2816 which is another 80 rupees 110 and 80. This has to come down by at least 55 rupees based on my observation, based on the tool that I'm using it. Then we have to revise it again if your trading perspective is short. But as I said, this is just not even concluded the wave 5 of the wave 4. So still wave 5 of wave 3. So still we are in the run of this wave. The 4 is not concluded. When the 4 is gonna happen, we will be correcting by 1200 rupees. It is going to happen. And if it is the stronger run, let's say 3200 से हो रहा है, so 23% of 3200, it's going to be around 600 plus some change. So 700-800 रुपये, 1200 नहीं होगा, 1200 रुपये का तो होगा ही एक टाइम पर. So that could happen around 4000. when it reaches 4000 का 20% 23% रख लो, 1200 हो जाएगा. We will come close. So is it gonna happen? We don't know, but that's what it shows me that could be happening. So this is Reliance. So if you are looking for the Reliance right now as a possible investment, or if you have a position, look for it, learn from it. What I'm looking is over here, and in the worst case to come over here, and that could be used as a buying opportunity. This is 2650, has to hold it, and could be used as an entry point or stop loss as well. Thank you for watching the video, and आने वाले week में I will be posting one more video about the characteristic of Elliott waves. I posted video earlier. What are the basic rules of the Elliott wave? I have a channel, and I have on YouTube and WhatsApp as well for educational purposes. I do not give that much time, but on a daily basis I try to spend 1 or 2 hours whenever possible. Thank you for watching the video, and I will say one more thing: keep the heart strong and keep the mind happy. So happy mind, stronger heart. I wish for everyone. Thank you.